एक आईआईटियंस की लाइफ कैसे होती है, मतलब उनका जो रूटीन है वो किस तरह का होता है स्टडी से, मतलब आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान और आईआईटी क्लियर करने से पहले आपका कैसा रूटीन था एंड लाइक किस तरह पवित्र होना। ने यार ये आपने बहुत अच्छा डिस्टिंग्विशन दिया कि लाइक द लाइफ बिफोर आईआईटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट आफ्टर आईआईटी। लाइक मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ यू आर अ जेई एस्पिरेंट, सो वट एवर यू नीड टू पुट टू क्लियर जेई, इट इज नॉट इवन 10% आफ्टर जेई। सो 2 साल अगर कोई भी आदमी अच्छे से मेहनत कर लेता है, देन आई बिलीव कि इवन विद द 10% ऑफ वॉट ही हैज डन इन हिज एस्पिरेंट जर्नी, that is sufficient to even I would say remain in the top 5 or 10 students of that IIT. So so the reason I am saying this is कि मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि IIT क्लियर करना इज अ बिग डील, and that is in fact a big deal, but preparing for IIT JEE is requires some smart work, and the more the person works smart in his aspirant journey, the lesser it is hard for him to clear that journey, as he can utilize his time uh, maximum by maximizing the productivity in those certain hours. So like before JEE, I used to wake up. So like ये बहुत बड़ा concept है कि sir, you should rise early and then study. But I would say कि every person has its own routine. So before JEE, I used to rise early because I believe that is the way I have been brought up. So I would wake up at 5, and actually I was in the second shift, so I used to study for 3 to 4 hours continuously. So that is what I think every aspirant has to develop, sitting for at least 3 to 4 hours, and that too specific in your time because subah shanti hoti hai, so there is no one to disturb you, not even your family members. So that is the time you have to maximize your uh, potential. So 3 to 4 hours, और मैं उस टाइम ऐसे सब्जेक्ट ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करता था, दैट इज टफ टू मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह मेरा दिमाग ज़्यादा तेज चलता है. सो दैट इज वॉट आई एम सेइंग कि एवरी इंडिविजुअल हैज टू आइडेंटिफाई एंड अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनैलिटी ही हैज टू डेवलप हिज टाइम टेबल. बट वॉट एवर बी द टाइम टेबल इज, उसमें एटलीस्ट एक 3 से 4 घंटे की सेटिंग होनी जरूरी है जिसके अंदर आप अपने उन सब्जेक्ट्स को कॉन्कर करें जो आपको लगता है कि आपके वीक है. उसके बाद एज द डे पासिस आई वेंट टू माई स्कूल, and after my school, like after returning from my school, I actually tried to do my homework in my school itself, so that when I returned from the school, I could work on the subjects like maths and physics, which require more practice and not, I would say, brainstorming or mugging. So that is what my schedule was. And now in IIT, I would say, I would say what an engineer is studying just a week before the exams, and rest of the time we actually work on some skills. It could be either talking to people, starting your own adventure. So that is what we try to develop, and all the academics is happening just before a week of the exam. So they are completely different, as Pavitra pointed out.